Good morning, dear children. Hope you all are fine and staying safe at your home. As earlier you have done first and second passages, unseen passages, so now we are going to do the third passage, that is Face in the Dark. It was one cold evening on December 23. एक बारी it was one cold evening, एक ठंडी evening, शाम. Cold, you all know. ठंडी evening is शाम on December 23. The date is December 23. How can I forget that day? Now the writer is saying कि मैं उस डेट को कैसे भूल सकता हूँ. उस कोल्ड इवनिंग December 23 मैं कैसे भूल सकती हूँ या कैसे भूल सकता हूँ. I was returning home from the library. I was returning home. मैं वापस जा रहा था घर. लाइब्रेरी से मैं घर वापस जा रहा था. When all of a sudden the lights went off. जब एकदम से लाइट चली गई. लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स बंद हो गई. Since this was a routine problem, I always carried a pocket torch. कहता कि वो रूटीन प्रॉब्लम थी, मतलब हमेशा ऐसा होता ही था. लाइट चली जाती थी जब भी मैं अभी तो वो घर लाइब्रेरी पर वैसे भी उसके मोहल्ले में लाइट चली जाती थी. दिस वॉज अ रूटीन प्रॉब्लम. कहता ये रूटीन प्रॉब्लम थी. आई ऑलवेज, रूटीन मतलब डेली बेसिस प्रॉब्लम, डेली ऐसा होता ही था. आई ऑलवेज कैरीड अ पॉकेट टॉर्च. पॉकेट टॉर्च, टॉर्च जिससे ब्राइट लाइट होती है, कहता मैं वो हमेशा कैरी करके रखता था. I was lost in thoughts when I heard someone sobbing. कहना कि I was lost in thoughts कि मैं अपने ख्वाबों में खोया हुआ था. Thoughts. He was thinking something when he heard someone sobbing. Sobbing means रोना, weeping. ठीक है, crying. I was lost in thoughts when I heard someone sobbing. I turned my torch. अब उसने torch on कर ली. Left and right and saw a figure sitting on a stone. उसने ऐसे अपनी टॉर्च घुमाई for finding who is there and saw a figure. एक बंदे की फिगर देखी, जैसे कोई ऐसे बैठा हुआ है, उसको परछाई दिखी कह लो. सिटिंग ऑन अ स्टोन, कोई एक स्टोन पे बैठा था कोई बंदा. अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम वेयर आई वॉज स्टैंडिंग. थोड़ी सी दूर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे कहता जहाँ मैं खड़ा था उससे बस थोड़ी देर. पोएट स्टैंडिंग है तो उससे थोड़ी सी दूर जो है वो पर्सन खड़ा था, बैठा था ऑन द स्टोन. I called out, hello, what's the problem? Who are you? कहता कि मैंने बुलाया कि हेलो, क्या प्रॉब्लम है, तुम कौन हो, why are you sitting, कि तुम उधर क्यों बैठे हो, and why are you crying? No one replied. उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया. I beamed the torch on his face and saw it had two big eyes. ठीक है, अब किसी ने रिप्लाई नहीं दिया जब उसने क्वेश्चन पूछे. मैंने उसके मुंह पे, बीम्ड मतलब उसके मुंह पे टॉर्च मारी. बीम्ड द टॉर्च ऑन हिज फेस एंड सॉ, और क्या देखा जब उसके फेस पे टॉर्च मारी. इट हैज टू बिग आईज, दो बिग आईज थी. एंड नथिंग एल्स, उसके पास ओनली टू बिग आईज थी. नो नोज, नो ईयर्स, नॉट इवन आईब्रोज. This type of face it was, okay? No nose, no ears and not even eyebrows. The torch fell from my hands. I screamed out of fear and starting running. अब जब एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ eyes हो और कुछ ना हो, she was frightened. The torch fell from my hands. उसके हाथ से जो torch है वो गिर गई. I screamed out of fear and started running. और स्क्रीम्ड आउट ऑफ फियर, बहुत डर में मैं भागी कि हाय ये कौन है, भूत भूत, चिल्लाई. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, आउट ऑफ फियर एंड स्टार्टेड रनिंग, और उधर से भागना शुरू कर दिया. वी हु इज इट. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व बैक एक्सरसाइजेस. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज, राइट ट्रू अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू. टी अगेंस्ट द जो ट्रू है वो टी लिख दो, एंड जो फॉल्स हैं वो उस पर एफ लिख दो. Okay, let us start. One December evening, the writer was going to the library. See here, it was cold December. How can it? He was returning home from the library. He was not going to the library. Okay, returning home. So it will be false. Next, the writer always carried a torch with him.
Yes, see, here it is written, I always carried a pocket torch. It means true. Next page. The writer heard someone sobbing. क्या उसको सुना था किसी की आवाज? See, yes, we have read here that when I heard someone sobbing, it means the statement is true. Next, when the writer asked, who are you? The figure replied softly, false. Why false? Because there was no reply. Figure didn't reply. Next, the writer touched the figure. Writer ने figure को touch किया था. See here, I beamed the torch. No, because he only beamed the torch. He didn't touch it. So it is false. Now next, complete the following sentences by filling in the blanks as briefly as possible. मतलब ये fill करने blanks जितना छोटा हो सके. As briefly. The writer always carried a pocket torch with him because. Now see here. Here it is written, I always carried a pocket torch. Because. Why? Because it was a routine problem. What was a routine problem? Lights went off. It means power cut. Light went off was a routine problem. So you will write because power cut, light चली जाना was a routine problem. ठीक है, जब लाइट चली जाती है, so he or she needed torch with him. Next, when the writer beamed the torch on the figure, he saw. अब see here, when the writer beamed the torch, तो उसने क्या देखा कि it had two big eyes and nothing else. We will write the same statement. Okay? We will write the same statement. It had, when the figure saw, it had two big eyes and nothing else. No nose, no ears, not even eyebrows. Okay, next. The writer started running because he was. क्यों भागा था? It is very clear. He screamed out of fear. Why did he run? Why did he started running? Because he screamed out of fear. He was afraid. Because he was afraid. We can write afraid. वो डर गया था. Okay, so here we end with our exercise. It was just fill-ups and true-false, and it was on the basis of the passage. Hope you understood it. Try solving other passages on your own. Thank you and have a nice day.